Question number 91 is proteins isolated from bacteria that catalyze specific cleavage of DNA are options है हमारे पास restriction enzyme, bacteriophage enzyme, methylating enzyme and telomerase. Now the question is asking about the enzyme that cleaves the DNA. So we all know restriction enzyme is one. So the correct answer is option 1, restriction enzyme. Next question is a small circular DNA molecule used as a vector to transmit foreign DNA is options है हमारे पास plasmid, prions, liposome and liposuction. Now the correct answer is option 1, plasmid. Let's see what other options are. Now it's saying prions. So prions are proteinaceous infectious agents. Liposomes are small artificial vesicle of spherical shape that can be created from cholesterol and natural non-toxic phospholipids. वैसे नाम से पता चल रहा है लिपोसोम्स लिपिड से मिलके बने हैं and they are naturally occurring non-toxic phospholipids. Liposuction is a way of inserting a particular DNA into the cell. It is, or we can say it is a liposome-based transfection which uses a lipid complex to deliver DNA to cell. ये हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी किया था शायद प्रीवियस स्लाइड में लिपोफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में हमसे पूछा था लिपोसोम को यूज करते हुए which method is used to deliver DNA into the cell if you remember. 93 is the TI plasmid is generally used to genetically engineer. Options are bacteria, plant, fungi, and animals. Now, TI plasmid is the tumor-inducing plasmid, which is obtained from the bacteria uh, Agrobacterium tumefacium. This bacteria causes tumor disease in plants' roots, if you remember. So this bacteria kind of show compatibility with the plants. We can say it's causing because it's causing disease in plants. So we can say that that's why we can say that TI plasmid is generally used to genetically engineer plants. So option 2 is the correct answer. 94 is which of the following enzymes can be prescribed as a DNA-dependent RNA polymerase? Options are primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, and reverse transcriptase. Now, what is DNA-dependent RNA polymerase? These are the terms we use to describe these particular enzymes we use in central dogma. DNA replication हो जाए चाहे DNA replication में हम बोलते हैं DNA dependent DNA polymerase, ट्रांसक्रिप्शन में हम बोलते हैं DNA dependent RNA polymerase मतलब DNA से RNA का बनना. So that's why it's talking about transcription के बारे में बात किया है. So if you see option 1 primase is the correct answer. बाकी ऑप्शन आप देखिए सेकंड एंड थर्ड DNA polymerase 3 and 1 इनको हम DNA replication में यूज करते हैं. So these are DNA dependent DNA polymerase. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो ऑप्शन सवाल ही नहीं उठता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज व्हाट RNA से DNA का बनना. तो ये जो है it is RNA dependent DNA polymerase enzyme. That's how all these are classified into these categories. So option 1 is the correct answer, primase. 95 is which of the following statements regarding a double helical molecule of DNA is true? Options are option 1 कह रहा है all hydroxyl group pentoses are involved in linkage. So first option is wrong because we know only one group is involved in linkage, one hydroxyl group of sugar. Second कह रहा है that bases are particular to the axis. सही कह रहा है. Third option is saying that each strand is identical. तो third अपना गलत है because strands are not identical. They are rather complementary to each other. Fourth कह रहा है each strand has parallel 5' to 3' direction. So we know that both strands of DNA और RNA हम बोले या फिर double stranded nucleotide की बात करें. So these are एंटी पैरेलल टू ईच अदर. एंटी पैरेलल होते हैं एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है 5' टू 3' तो दूसरे की होती है 3' टू 5'. सो आवर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर दैट बेसिस आर पर्टिकुलर टू द एक्सिस. नेक्स्ट इज डैश इज अ मल्टी मार्कर
नाउ इफ यू कैन रिकॉल, हमने मे बी प्रीवियस वीडियो में मॉलिक्यूलर मार्कर बेस ये क्वेश्चन किया था, तो हमसे पूछा है मल्टी लोकस मार्कर कौन सा है इसमें से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, AFLP, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये मल्टी लोकस मार्कर होता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। तो AFLP को लेते हुए देखते हैं हम, AFLP के एग्जाम्पल को लेते हुए। So this AFLP is a PCR based technique that uses selective amplification of subset of digested DNA fragments. So it's a technique we simply use to amplify the digested DNA fragments. DNA fragments जो हमने already digest कर लिए हैं उनके amplification के लिए. So these DNA fragments, they represent different location of the genome. That's why we call it multilocus marker. Next is a plant called Rauwolfia is under the threat of extinction. To save the plant, which technique is highly useful? Options are genetic engineering, DNA fingerprinting, hybridoma technology and in vitro culture. So ये जो प्लांट है रवुल्फिया, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं तरह तरह के। मे बी पहले पूछा गया था दैट किसी जीन का नाम दिया हुआ था और हमसे पूछा गया था कि किस स्पीशीज में मिलती है रवुल्फिया की ये। तो यहाँ हमसे पूछा एक्सटिंक्ट होने से कैसे बचाएं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इन विट्रो कल्चर की हेल्प से हम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं इस प्लांट के लिए। So option 4 is the correct answer. 98th question is, a clone is a group of organisms produced by, options are asexual method and genetically similar, asexual method and genetically dissimilar, option 3 is sexual method and genetically similar, and option 4 is sexual method and genetically dissimilar. अब हमसे क्लोन के बारे में पूछा है, how clones are obtained. So clone, we know that these are the genetically similar copies of particular organisms. अब अगर कोई organism है, they are genetically similar, which means that they are obtained by the means of asexual reproduction, क्योंकि asexual reproduction से हमको variations नहीं obtained होते हैं, genetically similar हमको organisms obtained होते हैं. That's why option 1 is the correct answer. Clones is a group of organisms which are produced by asexual method and are genetically similar. Next is, expression vector are those which, options are produce protein products, option 2 used for genomic libraries, option 3 used for chromosome synthesis, and option 4 is used for fingerprinting. So expression vectors are actually used for the protein products for formation. So that's why option 1 is the correct answer. Next is somatic embryos are. Options क्या कह रहा है हमें? These are the embryos developed from zygote after fertilization. Option 2, embryos developed from egg without fertilization. Option 3, embryo-like structure developed from the cells of callus. And option 4 is embryos developed by ovules. अब आप देखिए तो सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक से ही पता चल रहा है सोमैटिक क्या होता है, बॉडी सेल्स विच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जैसे स्पर्म हो गए, एग हो गए, इनसे रिलेटेड है ही नहीं। सो द एम्ब्रियो विच इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से फॉर्म नहीं हो रहा है। तो आप देखिए जाइगोट जो है, जाइगोट फॉर्म किससे होता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। दैट्स वाई ऑप्शन 1 नहीं होगा। सेकेंड हमारा आ गया है डेवलप फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट एग क्या है? हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है, सो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 कह रहा है दैट एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ कैलस। नाउ दीज कैलस आर नॉट एट ऑल रिप्रोडक्टिव सेल्स, इट इज अ सिंपली मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो ये सोमैटिक सेल्स होती है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे सोमैटिक एम्ब्रियो पूछा है और सोमैटिक बॉडी सेल से रिलेटेड होता है। So that's why option 3 is the correct answer. Somatic embryos are embryo-like structure which are developed from the cells of the callus. Question 101 is, meristem culture helps in developing. Options are hybrid plants, virus-free plants, disease-resistant plants, and tall plants. Now what is meristem? This meristem tissue is actually, if you can recall, ये प्लांट की एपेक्स पे प्रेजेंट होता है बेसिकली, और ये वो पार्ट है प्लांट का विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग।
जो कंटिन्यूस डिवीजन शो कर रहा है, और अगर यहाँ पे इस पार्ट या मेरिस्टेम टिश्यू की सेल्स जो है अगर कंटिन्यूस डिवीजन शो कर रही हैं, which means these cells are free from all sorts of we can say disease. तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं मेरिस्टेम कल्चर की, मेरिस्टेम की, सॉरी, मेरिस्टेम, व्हाट इज मेरिस्टेम? So it is a formative plant tissue which usually made up of small cells capable of dividing indefinitely and giving rise to similar cells or to cells that differentiate to produce the definitive tissues in organs. तो मेरिस्टेम कल्चर को हम यूज करते हैं बेसिकली वायरस फ्री प्लांट्स ऑब्टेन करने के लिए. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Don't confuse it with option 3 which is saying that disease resistance plant. मेरिस्टेम कल्चर की जो applications हैं actually these are only limited towards the virus infection. So हम बोलेंगे option 2 is the correct answer. Next question is DNA, a term used in cDNA technology, means. Options are competitive DNA, option 2 chemical DNA, option 3 complex DNA, and option 4 is complementary DNA. So the C in cDNA technology represent complementary DNA. So option 4 is correct answer. Now what is the cDNA? Actually it is the DNA which is obtained from mRNA through reverse transcription. तो यहाँ पे क्या है, जो हम यहाँ पे जो DNA ऑब्टेन्ड होगा mRNA से हमने स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन्स को हटा दिया है, नॉन कोडिंग पार्ट हटा दिया है. तो ये जो mRNA हम यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट, इसमें सिर्फ एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स हमने हटा दिए हैं, सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट है. तो इस कोडिंग वाले पार्ट से जो हम DNA बनाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, इस DNA को हम cDNA बोलते हैं. और टेक्नोलॉजी ये है, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज cDNA टेक्नोलॉजी. 103 is a part of nucleic acid used to find a gene by hybridization is called. So the correct answer is option 3 probe. This part of nucleic acid जो है इसको हम probe बोलते हैं. Now what is this probe? This probe is a single stranded sequence of DNA or RNA which have this complementary sequence in a sample. अब हम इस जो probe होते हैं, these are basically tagged with the help of phosphate और अदर रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिससे क्या है हमें पता चल जाता है कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड का, उसमें कहाँ जाके ये इंटीग्रेट हो रहे हैं. So that's why with the help of these probes हम एक पर्टिकुलर जीन की लोकेशन पता लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में, या हम बोले DNA RNA में. So the probe is placed into contact with the sample under condition which allows the probe sequence to hybridize with its complementary sequence, and by this we can get to know the location of a particular gene in a nucleic acid. Okay, moving on to next question. 104 is a segment of DNA that reads from the same forward and backward is called. Options are option 1 palindromic DNA, option 2 complementary DNA, option 3 plasmid DNA, and option 4 is copy DNA. So option 1 is the correct answer, palindromic DNA. अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं palindromic sequence होता क्या है actually. Now if you look at the sequence, ये हमने एक डबल स्ट्रैंडेड DNA का लिया है. तो आप देखिए 5' to 3' तो हम इसको रीड करेंगे, इट सेज GGATCC, और इसका जो लोअर वाला स्ट्रैंड है उसको भी अगर हम 5' to 3' रीड करेंगे तो ये सेम है ऊपर वाले स्ट्रैंड के, विच इज GGATCC. तो ये हम बोल सकते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. ये डबल स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में, सिंगल स्टैंड में भी हम आप इसको देख सकते हैं, आगे से भी जो सेम रीड करें और बैकवर्ड से भी सेम रीड करें. 105 is resistance to ring spot viruses in papaya was developed by. Options are somatic hybridization, in vitro mutagenesis, antisense RNA technology, and soma clonal variation. Correct answer is option number 3, antisense RNA technology. Now this technology is used for the inhibition of gene expression or downregulation of a gene. So to prevent this plant papaya for this disease, we can simply inhibit the gene expression of the gene which is causing this disease, so that we can develop the resistance against ring spot virus in papaya plant. So option 3 is the correct answer.
Question 106 is, which of the following RNA molecule is involved in the regulation of gene expression? Options are microRNA, 23S RNA, 5S RNA and tRNA. So correct answer is option number 1, microRNA. Now how microRNA is involved in regulation of gene expression? So it is involved through this RNA interference technology. RNA interference की help से microRNA is involved in regulation of gene expression. Next question is the absence of sigma factor in RNA polymerase. Option 1, it affects elongation only. Option 2, it blocks initiation only. Option 3, it affects both initiation and elongation. Option 4 is does not affect transcription. Now if we can recall in transcription, we have these two factors, sigma factor and rho factor. Sigma is associated with initiation and rho factor is associated with termination of transcription. So option 2 is the correct answer. Sigma factor जो है, its absence only affects the initiation only. So option 2 is the correct answer. Next is the RST mutation in wheat that were pivotal for green revolution caused reduction in plant height due to impairment in option 1, gibberellic acid biosynthesis pathway, option 2, gibberellic acid signaling pathway, option 3, auxin biosynthetic pathway, and option 4 is auxin response pathway. So correct answer is option number 2, gibberellic acid signaling pathway. Next is an organism with the group with the genotype capital A, capital B, small b, capital C, small c, and capital D is self. The four genes are independently assorting, and now the question is asking that what proportion of the progeny will show this genotype: capital A, small b, small c, and capital D. So what we need to do is simply हम देखेंगे कि गैमीट क्या क्या बन रहे हैं यहाँ से. तो पेरेंट हमारे हैं, हमको गिवन है, सेल्फिंग कराई है, पेरेंट से हमारे 4 गैमेट यहाँ पे मिलेंगे और सिंपल एक पनेट स्क्वायर की हेल्प से आप जो है यहाँ पे प्रोजानी के जीनोटाइप हम निकाल लेंगे. तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा. 1/64 जो है हमारा रेशियो आएगा इस जीनोटाइप का जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज pre-germination cold treatment to break dormancy is called option 1, scarification, option 2, stratification, option 3, dormancy break, and option 4 is vernalization. तो सीड्स में डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Next question is the number of moles of solutes per kilogram of solvent is referred to as molality बोलते हैं इसको. So option 2 is the correct answer. Next is tetrazolium chloride commonly used in seed viability testing indicated. Options are cellular respiration, option 2, intact cellular ultrastructure, option 3, seed germination, option 4 is none of the above. So correct answer is option 1, cellular respiration. कैसे? तो हम ये जो seed viability की टेस्ट करते हैं that which seeds are efficient to germinate into a plant, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अब क्या होता है, इनिशियली हमारा जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता है, but gradually it changes to red color when it comes in contact with hydrogen. और अपनी ये जो हाइड्रोजन है कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन की हेल्प से. तो वो जो सीड्स जिनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगी जिसकी वजह से अपना जो टेट्राजोलियम सॉल्यूशन है वो कलरलेस से रेड हो जाएगा, जो कि एक रेस्पिरेशन इंडिकेटर है एक तरीके से. So those embryos which showing this active respiration are considered viable and they turn red, and the darker the color the greater is the respiratory activity in the cell. So that's how we test the viability of seeds before germinating them. Next is the Ames test is used in options are to detect bacterial virus, option 2, to determine the rate of DNA replication. Next is to examine the potency of antibiotics, and option 4 is
To measure the mutagenic effect of various chemical compounds. So option 4 is the correct answer. तो हम यूज करते हैं to measure the mutagenic effect of various chemical compounds. Next is the technique used in genome editing is options are antisense RNA, option 2 site-directed mutagenesis, next is epigenome modification and option 4 is CRISPR-Cas9. तो जीनोम एडिटिंग में जो है हम CRISPR-Cas9 वाली टेक्निक को यूज में लेते हैं. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ दिस CRISPR-Cas9 या फिर हम बोले दिस एंजाइम, it edits gene by precisely cutting the DNA and then letting natural DNA repair processes to take over. DNA repair के प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलेगा CRISPR-Cas9 जो है ये एंजाइम, it simply cuts the DNA. Genome editing में that's why we use this technique. Next is genomic libraries consist of options are fragments of genomic DNA, fragments of cDNA, fragments of RNA and fragments of protein. So option 1 is the correct answer. Genomic libraries consist of fragments of genomic DNA. It's very obvious. Next is the number of different types of tRNA required is less than the number of codon because of options are Vobel pairing. So first option is सही है. Vobel pairing की वजह से we require less number of tRNA as compared to the number of codon. Next is transfer of genetic material from one bacterial cell to another by means of virus particle is called, options are transduction, sexduction, conjugation and transformation. So correct answer is option 1. This is known as transduction. 118 is the exchange of non-sister chromatids of homologous chromosome is known as, options are reciprocal translocation, option 2 recombination, option 3 inversion and last is non-reciprocal translocation. So correct answer is option number 2 recombination. 119 is in the B form of DNA the pentose sugar is dash endo and dash exodeoxy sugar. So option 1 ही अपना सही है यहाँ पे. This pentose sugar is 2' endo and 3' exodeoxy sugar. Last is the transcription of black operon is negatively regulated by, options are repressor, CM, lactose and allolactose. तो हमने मे बी प्रीवियस वीडियो में कराया लैक ऑपेरॉन का पूरा, हमने स्ट्रक्चर, फंक्शंस, जीन रेगुलेशन सब कुछ हमने देखा था. एंड वी नो दैट नेगेटिवली रेगुलेशन किसकी हेल्प से होता है, रिप्रेसर की हेल्प से होता है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. So with this 120 questions are over and we have completed this question paper. Thank you so much. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe the channel.